Good evening to all of you. Is this audible? All clear, audible, visible to all? शुणी पार्छन समस्ते क्लियर? ऑलराइट, बढ़िया. सो आज गोटे बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करिए मु विथ रेस्पेक्ट टू योर मेंस एग्जामिनेशन. मेंस रिलेटेड गोटे बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक हमें देखिबा. लास्ट क्लास रे हमें डिस्कशन करूथिले ऑन एक्सटर्नल सेक्टर. एक्सटर्नल सेक्टर ऊपर डिस्कशन थिला लास्ट टाइम. एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड ऑल ये सब डिस्कशन. आज देखिबा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रीन फाइनेंस करिवे या ऊपर डिस्कशन प्लस आ किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आज प्रैक्टिस करिवे. हमें देखो ये आज किछि क्वेश्चन भी आनिछि. हम अनेक क्लास कलेनी इकोनॉमिक्स रो पाखा पाखी 9टा 10टा क्लास. इकोनॉमिक्स पाखा पाखी हमें 9टा 10टा क्लास कलेनी. आज किछि क्वेश्चन आंसर भी प्रैक्टिस करिवे. लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन करिवा ना फर्स्ट पढिवा कोन करिवा? चलो एमती करिवा. फर्स्ट किछि क्वेश्चन करिवा, तापरे किछि कांसेप्ट पढिवा, तापरे आ किछि क्वेश्चन देखिवा. तो लेट्स कंटिन्यू लाइक दिस. ए भलिया करिवा. ठीक अछि. चलो क्वेश्चन होउची, क्वेश्चन कहूची, rather than focusing solely on quantity, inclusive growth concerns itself with the quality of growth. Examine also highlight the core components of inclusive growth. Also highlight the core components of inclusive growth. ये ला क्वेश्चन. ताल क्वेश्चन सब बेले जते बेले क्वेश्चन देखुछन तीन थर पढिबे क्वेश्चन, तापरे ता बेसिक जिंस को आसीबे. मु कहिछि ऑलरेडी पूर्वरु मध्ये आको डिस्कस करिछि कि व्हेनेवर यू आर राइटिंग आंसर, आपन आंसर तीनटा पार्ट रे हो दरकार. इंट्रो पार्ट, बॉडी पार्ट एवं कंक्लूजन पार्ट. इंट्रो पार्ट दिस इज ऑलवेज मिरर टू योर आंसर. एटी कोन लिखिबे ना, एटी सब रे किछि फैक्ट फिगर दियंतु, डाटा दियंतु, फैक्ट फिगर डाटा ये सब देबे इंट्रोडक्शन में सब बेले. ऑथेंटिकेटेड डाटा, मन इच्छा डाटा नहीं. ना बॉडी पार्ट रे कोन लिखिबे ना, एटी जो टॉपिक लिखुचंती, जो टॉपिक ऊपर क्वेश्चन अछि तार मेरिट्स डिमेरिट्स हैला, बा मु जदी कहबी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, मेरिट्स डिमेरिट्स बा एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ई पार्ट गुडा को एटी लिखिबे सब. जदी किछि गवर्नमेंट स्कीम अछि, जदी किछि गवर्नमेंट पॉलिसी अछि रिलेटेड, बा जदी किछि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अछि रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अछि ना, कंक्लूजन जोड़ा लिखुचंदी इट शुड बी ऑलवेज फ्यूचरिस्टिक. इना कोन ऑलवेज फ्यूचरिस्टिक बा सॉल्यूशन सेंट्रिक हवा दरकार. कोन कहली इट शुड ऑलवेज बी सॉल्यूशन सेंट्रिक. कंक्लूजन टा आपनकर सब बेले सॉल्यूशन सेंट्रिक हेतबा दरकार. बुझियला?
दिस क्लियर एटा केमती स्ट्रक्चर लिखिए बुझेला ताले एटी कोन कहली बॉडी पार्ट रे कोन लिखिबे कंक्लूजन नो दिस इज इंपोर्टेंट एग्जामिनर एया को देखिबो आपन खाता सो एटा सबले फ्यूचरिस्टिक बा सॉल्यूशन सेंट्रिक हेतिवा दरकार एमती लिखिबे एटी आसा एटी देखो क्वेश्चन एटी देली फोकसिंग सोली फोकसिंग ऑन क्वांटिटी इंक्लूसिव ग्रोथ कंसर्न्स इटसेल्फ विथ क्वालिटी ऑफ ग्रोथ कापने इट फोकसेस ऑन क्वालिटी ऑफ ग्रोथ एक कथा कहूची सो ये कहूची इंडिया इज रैंक वर्ल्ड्स फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन एब्सोल्यूट नंबर्स नाउ देखो मु कोन कहितली इंट्रोडक्शन इज ऑलवेज लाइक अ मिरर टू योर आंसर introduction is like always a mirror to your answer है and rank third in terms of PPP purchasing power parity but looking at the various social indicators such as human development index inclusive development index global hunger index India is not performing well now एथिरु कोन बुझुछ ए जो स्टेटमेंट लिखाई छी ना कोन लिखाई ताको छाडा ए स्टेटमेंट रु बुझुचंदी आमे कोन मु कहितले इंट्रोडक्शन में आपण डाटा देबे ना एठी ऑथेंटिकेटेड डाटा दिया छी कि नहीं देखो इंडिया इज वर्ल्ड्स फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है so in terms of PPP it is doing good but ei guda kare development index global hunger index ethire सब India is not doing good तले एथरा हम कोन बुझिले त माने India only focusing हमें इटा देला ना एटी क्वांटिटी कथा क्वालिटी कथा कहू सो एई पार्ट रे हम देखिले क्वांटिटेटिवली वी आर डूइंग गुड बट क्वालिटेटिवली वी आर नॉट डूइंग गुड कोन बोले क्वांटिटेटिवली वी आर डूइंग गुड बट क्वालिटेटिवली वी आर नॉट डूइंग गुड सिंपल कथा कोन बोले क्वालिटेटिवली हमें क्वांटिटेटिवली हमें बेटर फंक्शन परफॉर्मेंस करूचे बट क्वालिटेटिवली हमें परफॉर्मेंस करि पारु ना है एति केला कथा ओके ताले एटी इंक्लूसिव ग्रोथ लिखि देला हमें बुझिला एटी इंक्लूसिव ग्रोथ कोन कोन कहले एटी इंक्लूसिव ग्रोथ कोन हमें लिखि देले व्हाट बा इंक्लूसिव ग्रोथ को ओरिएंटेशन नै आस्थिले इंक्लूसिव ग्रोथ को वर्तमान पिक्चर को नै आस्थिले तापर डायरेक्टली यू कैन राइट अबाउट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ कोन or what are the concerns with economic growth kahi kyuni because of vicious cycle of exploitation continues jobless growth hochi there is poor investment in social infrastructure doesn't capture income inequality environmental impact these sabu these are concerns with economic growth सहित ए concern गुडा लागि रुछि एति पई economic growth better perform करि पारु नाही so growth environmental impact देखुनी इनकम इनइक्वालिटी को कैप्चर करूनी ये खाली कहूँ ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ जीडीपी ये देखे दूची सो इंक्लूसिव ग्रोथ कौन मु कहि ऑलरेडी इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन मान ऊपर लिखन लाइक ओईसीडी कौन डेफिनेशन दोची इंक्लूसिव ग्रोथ ओईसीडी डेफिनेशन कहूँ कि ग्रोथ दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली अक्रॉस सोसाइटी एंड क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दैट इज ग्रोथ वर्ल्ड बैंक डिफाइन करूची कोन इंक्लूसिव ग्रोथ रेफर्स बोथ टू द पेस एंड पैटर्न ऑफ ग्रोथ सो ये जो दीटा डेफिनेशन आमे लिखिले गोटे हला ओईसीडी रो आ गोटे हला कार ना वर्ल्ड बैंक रो करगला गोटे हला ओईसीडी रो आ गोटे हला वर्ल्ड बैंक रो हला जो डेफिनेशन लिखिले ये डेफिनेशन कोन करछि ना ये स्ट्रेंथेन करछि आपन का आंसर दिस डेफिनेशन स्ट्रेंथेन्स योर आंसर या आपन का आंसर को स्ट्रेंथेन करछि डेफिनेशन बुझिला मो कथा पहला कॉन्सेप्ट तापर लिखिए इंक्लूसिव ग्रोथ कंसर्न्स विथ द क्वालिटी ऑफ ग्रोथ ना क्वालिटी को जगह रे कंसर्न्स विथ द क्वालिटी ऑफ ग्रोथ रे कोन ना लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बा सस्टेनेबल इक्वल सोसाइटी बा इगैलिटेरियन सोसाइटी फॉर ऑल बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ करिवो लिविंग स्टैंडर्ड को डेवलप करिवो बेसिक ह्यूमन राइट्स बढ़ाइवो कॉन्स्टिट्यूशनल गोल को डेवलप करिवो हैला ये गला ग्रोथ विथ रेस्पेक्ट टू क्वालिटी बा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऊपर इति एमति लिखले तापर लिखियो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ कोर कंपोनेंट्स कोन ना इकोनॉमिक ग्रोथ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फाइनेंशियल इंक्लूजन सोशल डेवलपमेंट स्किल डेवलपमेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ये सब दीज आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ बुझिए गला क्वेश्चन केमते लिखियो आई होप एवरीवन इज क्लियर हाउ टू राइट एन आंसर समस्त बुझिले कि नहीं हां कि नहीं कोन समस्त बुझिले कि नहीं कोन
बुझिला बुझिला ओके कौन आज कमेंट आसुनी अच्छा कि नहीं समझ अच्छा कि नहीं अच्छा ताले आज कॉन्सेप्ट को आसीबा तापर आउ केतरा क्वेश्चन को आसीबी आज कॉन्सेप्ट अछि कॉन्सेप्ट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट हां डी प्रधान हां very broad concept about inclusive growth. I agree. Now, defining sustainable growth. What is the आज topic of discussion? Sustainable development or sustainable growth. आमे already सब बड़े focus कले कहाँ पर ना आमे सब बड़े focus कले on GDP. आमे कहले growth rate बढ़ू कौन कहते आमे कहले growth rate बढ़ू बा GDP बढ़ू कौन GDP बा growth rate बढ़ू. Now this is it increases quantitatively. कौन कहले it increases ये quantitatively increase करूछ. बुझिला कौन होची ना एटा क्वांटिटेटिवली इंक्रीज देखिले ना ग्रोथ रेट मींस मोर प्रोडक्शन मोर ग्रोथ रेट मींस मोर प्रोडक्शन प्रोडक्शन मध्ये अधिक मोर द प्रोडक्शन मोर इज द एनवायरमेंटल पोल्यूशन मोर इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन बुझिला एनवायरमेंटल पोल्यूशन मध्ये अधिक सो मोर द पोल्यूशन हमें कहबा दिस development is unsustainable. This is unsustainable development. So sustainable development कौन कहूची ना ये कहूची development keeping an eye on sustainable development कौन कहूची ना development हवा but keeping an eye on future generation. Keeping an eye on the future generation. फ्यूचर जनरेशन नीड टाको आखि आगे रखी कौन कहले कीपिंग एन आई ऑन द फ्यूचर जनरेशन एवे डेवलपमेंट हो बट फ्यूचर जनरेशन नीड टा हैम्पर न हो दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट सो दिस इज एक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग दिस इज एक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग राजा वेरी गुड इवनिंग राजा ना आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिस्कस करते बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक ताले सस्टेनेबल डेवलपमेंट रो कांसेप्ट फर्स्ट टाइम में कोड आसिला गोटे रिपोर्ट अच्छी जहाँ हूँ ब्रुकलैंड रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर आपको कह जाए ब्रुकलैंड रिपोर्ट ना ब्रुकलैंड रिपोर्ट रे फर्स्ट टाइम पे आसला कि ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट सो देयर ये कहला कि देयर इज अ नीड फॉर ग्लोबल एजेंडा फॉर चेंज कौन कहूची ये कुछ देयर इज अ नीड फॉर ग्लोबल एजेंडा फॉर चेंज so in establishing commission the UN General Assembly explicitly called attention to two important points कौन now well-being of the environment plus of economies and people environmental development and lokomanakar development people's development ये कहा था both are interconnected first point second sustainable development involves cooperation on a global scale cooperation is required को मानकर cooperation ना cooperation of कौन कहते ना cooperation of all countries कोऑपरेशन ऑफ ऑल कंट्री सब कंट्री मानकर कोऑपरेशन दरकार बुझेला कौन कहूँ ना कोऑपरेशन ऑफ ऑल कंट्रीज कहीं ना एनवायरनमेंट इज नॉट इंडिविजुअल कांसेप्ट एनवायरनमेंट इज फॉर एवरीवन नो पॉल्यूशन जदि ओजोन लेयर डिप्लेशन हुए बा पॉल्यूशन जदि अमेरिका रे हुए इट विल हैव इंपैक्ट ऑन द एंटायर ग्लोब मींस ऑन द अर्थ नॉट ओनली ऑन अमेरिका बुझेला सो दिस इज अ ग्लोबल कांसेप्ट दिस इज अ ग्लोबल कांसेप्ट बुझेला सस्टेनेबल डेवलपमेंट रे कोन लिखिबे सो दिस इज ऑल अबाउट इंटीग्रेशन मींस वाइडेस्ट पॉसिबल रेंज ऑफ सेक्टर्स अक्रॉस बॉर्डर्स कोन कहू वाइडेस्ट पॉसिबल रेंज ऑफ सेक्टर्स सो डिफरेंट सेक्टर को ये इंक्लूड करूची सो आवर डिसीजन शुड टेक इनटू कंसीडरेशन पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ सोसाइटी एनवायरनमेंट इकोनॉमी ये सब गुडा कटी इंक्लूडेड सब गुडा कटी इंटरलिंक बुझिला ओके देखिए एनवायरमेंटल इंपैक्ट पकाउची किए आ कहाँ पर अधिक एनवायरमेंट ऊपर
इंपैक्ट पकाउछन को माने रिच ना पुअर एनवायरनमेंट ऊपर अधिक इंपैक्ट किए पकाउछन अर्बन लोक ना रूरल लोक अर्बन लोक ना रूरल लोक अधिक किए पकाउछ डेवलप्ड कंट्री ना डेवलप्ड कंट्री ना डेवलपिंग अंडर डेवलप्ड कंट्री एलडीसी लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है कि करंट जनरेशन ना फ्यूचर जनरेशन वर्तमान लोक ना फ्यूचर जनरेशन सिंपल कथा कहूँ देख अधिक इंपैक्ट पकाउछन रिच बट तार नेगेटिव इंपैक्ट पड़ुछि कहा ऊपर रिच माने पॉल्यूशन करूछन बट इंपैक्ट पड़ुछि पोर मानक ऊपर अर्बन लोक पॉल्यूशन करूछन इंपैक्ट पड़ुछि रूरल ऊपर डेवलप्ड कंट्री पॉल्यूशन करूछन इंपैक्ट पड़ुछि लिस्ट डेवलप्ड कंट्री ऊपर करंट जनरेशन करूछि इंपैक्ट पड़ुछि कहा पर ना फ्यूचर जनरेशन ऊपर बुझिला करंट जनरेशन कहा पर करूछि ना फ्यूचर जनरेशन ऊपर इज क्लियर ताले एठी हमें देखले डिस्पैरिटी केमिति क्रिएट होउछि ना एमाने एनवायरनमेंट ऊपर इंपैक्ट पकाउचंती दे पुट इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट but they pollute environment but तार consequence on these people एमानक ऊपर consequence पड़ुछि बुझिला consequence on these people एई लोक मानकर ऊपर impact पड़ुछि आमे वर्तमान एनवायरनमेंट को लॉस कले एनवायरमेंटल लॉस कले करंट जनरेशन but future generation our next generation they will have shortage of resources बुझिला खुशी प्रणाम बुझिला तो एमाने इंपैक्ट पकेले एनवायरनमेंट ऊपर एनवायरनमेंटल लॉस एमाने कले इंपैक्ट पड़िला अधिक अंका ऊपर ताहले मते को एठी कोन हला जस्टिस वायोलेशन हला एई मानकर जस्टिस वायोलेशन होला एंड दिस जस्टिस इज बिकॉज ऑफ क्लाइमेट सो दिस इज कॉल्ड क्लाइमेट जस्टिस कोन दिस कांसेप्ट इज कॉल्ड क्लाइमेट जस्टिस आको पहला हमें क्लाइमेट जस्टिस बुझिला व्हाट इज क्लाइमेट जस्टिस बुझि पाले कि नहीं व्हाट इज क्लाइमेट जस्टिस ना वेरी इंपोर्टेंट कोनोसी बहिरे लेखाइन ट्रस्ट में कोनोसी बहिरु ये पाठ पाइबेन जे हम डिस्कस करछे आज so climate justice exactly kon hochi na impact on climate is put by someone and consequences is on someone and consequence is on someone else बुझिला प्रणाम प्रणाम मिस्टर इन्फॉर्मेशन गुड इवनिंग प्रणाम नमस्कार समस्त सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिस्कशन चलछि ताले सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोन कहूची ना ये कहूची डेवलपमेंट without compromising needs of future generation future generation नीड को compromise न करी कि डेवलपमेंट करिया कथा ये कहूची हैला that is called sustainable development or with less environmental impact बुझिला ताली ये कौन को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन करियो ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट विल स्प्रेड बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ टू ऑल सिटीजन्स ये समस्त पाखरे बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ पहुंचेयो ये समस्त पाखरे ग्रोथ पहुंचेयो यू आर इकोनॉमिक स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन व्हाट इज योर नेम ओरिजिनल नेम कौन you have written here mentioned yourself as Mr. Information this is your original name इकोनॉमिक स्टूडेंट बहुत बढ़िया इकोनॉमिक स्टूडेंट माने इकोनॉमिक्स रे बीए एमए करूछंती ना हम क्लास स्टूडेंट मोर देन आउ कोन ये करिवो ना ये कुछ अर्बन ब्राउन फील्ड्स को ये इकोलॉजिकली अर्बन हाउसिंग प्रोजेक्ट रे कन्वर्ट करिवो increasing educational opportunity both for girls and boys so this is about inclusion of both boys and girls innovative industrial process including citizens and stakeholder in policy making process all stakeholders to be included in the policy making so this is the meaning of sustainable development clear Ashwini good
बुझेला अश्विनी एंड अदर्स समस्त बुझिले सस्टेनेबल डेवलपमेंट रो एग्जैक्ट मीनिंग कौन बुझिले कि नहीं मते कोन आउ गोटे एस्पेक्ट को आसीबा एटी वुमेन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट now women and sustainable development now this is inclusion and sustainable development for long period growth जदि दरकार ये कहया कथा एटी वुमेन मानु को हमें इंक्लूड करिया दरकार कि दरकार नहीं इन द ग्रोथ प्रोसेस इन द ग्रोथ मॉडल क्वेश्चन होची if you want to ensure sustainable development if we want to ensure sustainable development tahale we have to include women population in it or not simple question women population को हमें include करिया दरकार कि दरकार नहीं absolutely yes कहीं ना female half of the world's human capital is female and they are undervalued and underutilized the world over so while female population are better utilized it could increase economic growth it could reduce poverty it could enhance societal well-being plus it can ensure sustainable development plus it can ensure sustainable development बुझेला so women has to be included in the developmental model women has to be included in the developmental model clear ताले हमें कौन लिखले what is sustainable development ना approach which meets needs of present without compromising ability of future generation जे present generation need को पूरा करूची but future generation need ऊपर कोनोसी प्रकार impact पकोने that is sustainable development Sustainable development is inclusive. It includes everyone in the society, female, rural population, marginalized or vulnerable section of society. This is, it protects the environment. This is environment friendly. This is ecology friendly. बुझिएला? This is ecology friendly. हाँ कि नहीं? नमस्कार, जय हिंद. बहुत बढ़िया है. लेट रे जॉइन करछन समस्ते. ऑलरेडी हमें क्लास पढ़े लेने बहुत. प्रणाम. ताले ये इकोलॉजी एनवायरनमेंट फ्रेंडली एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करूची इंक्लूसिव इक्विटेबल एंड इकोलॉजिकली साउंड इंक्लूसिव इक्विटेबल एंड दिस इज इकोलॉजिकली साउंड बुझिएला नहीं बुझिएला कि नहीं क्लियरली कौन कुणाल प्रणाम जय हिंद ताले what are key pillars of sustainable development now sustainable development includes economic sustainability कौन कहते economic sustainability so this is about long term economic growth without negatively impacting social environmental condition long term growth it generates wealth job opportunities कौन करछि ना it generates wealth or job opportunity है ना it promotes inclusive economic growth it promotes inclusive economic growth inclusive means for all for everyone for all or everyone supporting green job in renewable energy the green job को promote करछि it promotes green job in the renewable energy बुझिएला then environmental sustainability यार अर्थ कौन ना it protects the environmental sustainability preserves the biodiversity renewable non renewable energy pollution कमेबा fossil fuel रू नहीं renewable energy को यूज करिवा बुझिएला like wind energy solar power ये सब को यूज करिवा sustainable farming practice यूज करिवा in agriculture will be finding unsustainable practices हंगरे agriculture रे देखिबे unsustainable practices are used having negative impact on the environment on the soil on the water ये सब ऊपर negative impact पकोछ reforestation and biodiversity conservation to protect endangered species को protect करिया पाएंगे कौन कहूची ना reforestation and biodiversity conservation करियो ये ला ecological aspect now social sustainability now what is social sustainability for a long period पाइन for a long period पाई societal well-being ये create करो जेमती कि gender equality कौन करियो ये it will ensure gender equality प्रणाम तृणव जी इते एमती चिंताधारा सब कोड आसुची
एमती ना देखला बेलू भल लगुच नाउ इट साउंड्स कूल भल भल ना दौरान समस्ते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रे तृणभोजी व्हाट इज योर नेम ओरिजिनल ना कौन मिस्टर इनफॉरमेशन अश्विनी तुम्हें तृणभोजी बढ़िया चलो सोशल सस्टेनेबिलिटी आम कौन देखुचे ना ये कहूँ इनक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर ऑल कौन विक्ट्री एवरीवेयर गुड बहुत बढ़िया आई विश यू विन एवरीवेयर जीत सब जगह परीक्षा दियो परीक्षा भी जीत आई विल बी मोर देन हैप्पी बुझेला विक्ट्री जेंडर इक्वालिटी एजुकेशन हेल्थ केयर ये सब देखियो सोशल सस्टेनेबिलिटी कौन कहल जेंडर इक्वालिटी हेल्थ केयर ये सब देखियो सोशल सस्टेनेबिलिटी access to quality education for all access to quality health care for all हाँ कि नहीं access to quality education and quality health care for all बुझिए ना ताले सोशल सस्टेनेबिलिटी में कौन देखिले सोशल ले कौन देखिले ना फॉर ऑल फॉर एवरीवन बुझिए ना सोशल ले हम देखुचे कौन ना सोशल ले हम देखुचे फॉर ऑल और फॉर एवरीवन सिंपल जिंस एनवायरमेंटल एनवायरमेंट रे देखुचे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एनवायरमेंट रे कौन देखले एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन सिंपल जिंस तब आसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ना वेरी इंपोर्टेंट 2015 रे यूनाइटेड नेशन अडॉप्टेड 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखो जे एसडीजी गोल्स कौन कौन आनला हाउ मेनी गोल्स 17 गोल्स and 169 targets 17 goals and 169 targets तब पहले हम कौन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को no poverty end poverty in all forms and everywhere because nothing is more painful than poverty because nothing is more painful than poverty zero hunger end hunger achieve food security this is zero hunger ये कुछ hunger end करो achieve food security for everyone accessibility affordability and availability of food grains good health and well-being for everyone quality education for all equitable and quality education gender equality and empowerment of empower all women and girls gender equality SDG 5 SDG 6 clean water and sanitation SDG 6 कौन कहूँ ना clean water and sanitation ensures availability sustainability management of water and sanitation affordable and clean energy ensure access to affordable reliable sustainable energy modern energy affordable and clean energy decent work and economic growth promote sustainable inclusive growth कौन पूछिए ना sustainable inclusive growth for all decent work and sustainable inclusive growth for all industry innovation and infrastructural development reduce inequality within and among countries developed country underdeveloped country by inside one country जदि हमें देखिए इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे मु कहबी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वर्सेस मु कहबी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वर्सेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन कर्नाटका और तमिलनाडु बा मु कहबी लिटरेसी रेट रे जदि मु कहबी केरला वर्सेस बिहार बुझिए ना so inequality reduce kariba sustainable cities and communication like smart city inclusive self resilient sustainable cities responsible consumption and production ensure sustainable consumption and production pattern climate action take urgent action to combat climate change and its impact life below water conserve sustainable use life below water माने sustainable use of ocean sea river ये सब life on land protect restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystem peace justice strong institution promote peaceful inclusive society provide access to justice
partnership for goal strengthen means of implementation, revitalize global partnership for sustainable development. बुझीगला 17टा गोल बुझीगला 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्लियर बुझीला कि नहीं बुझीला बहुत बढ़िया क्लियर कल 17टा गोल बुझीला नाउ मोर क्वेश्चन होची क्वेश्चन एटी आसीबो कोन लॉन्ग क्वेश्चन व्हाट आर द चैलेंजेस टू अचीव दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स व्हाट आर द चैलेंजेस इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स international trade about question okay no problem we'll keep it in next session don't worry on your request we'll keep it in next session now, achieving sustainable development what are the challenges in achieving it कौन कौन प्रॉब्लम हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करियारे ना फर्स्ट प्रॉब्लम इज क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज जेहेतु ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज होची ये कौन को ना सी लेवल राइज करछि एक्सट्रीम हंगर पॉवर्टी बायोडायवर्सिटी लॉस ये सब देखिया को होची सो लो कार्बन इकोनॉमी देन पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी they are deeply interconnected poverty and inequality they are deeply interconnected so ये कुछ poverty inequality reduce हेले sustainable development हे परियो otherwise social sustainable development हे परियो नाही unsustainable consumption कौन consumption maybe food consumption हो बा electricity consumption हो बा कौन कहली बा electricity consumption हो कुछ होची कि नहीं सेटा कुछ हम करना unsustainable consumption yes lack of cooperation is also correct lack of cooperation is also correct now population growth is rapid population growth हुए in certain regions it increases pressure on resources like land water energy resource depletion unsustainable extraction of non-renewable resources like fossil fuel mineral metal degradation of renewable resource like forest fishery ये सब बुझेगला ताले चैलेंजेस कौन कौन बुझेला कि नहीं मते कोन सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करिया पई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करिया पई कौन कौन चैलेंजेस बुझेला प्रथम कथा तापर मु नेक्स्ट पॉइंट बुझी तापर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन एक्शन तापर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन एक्शन sustainable development in action now what are in action means what are the strategies that we are adopting to ensure sustainable development simple kata strategies that we are adopting to ensure sustainable development kon na pratham hochi renewable energy transition countries like Germany Denmark they are leaders in transitioning to renewable energy solar energy hydroelectricity ये सब का में कौन wind energy ये सब का में convert कर India has to invest heavily in solar energy through the International Solar Alliance एटा कौन तो environment रे पढ़ियो International Solar Alliance कौन second sustainable agriculture now
एग्रीकल्चर टा अनसस्टेनेबल केतेबेले हुए मते कहल CHSL एग्जाम दीपक ओके ऑल द बेस्ट दीपक ऑल द बेस्ट भला करिक आस परीक्षा काली मते को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बा अनसस्टेनेबिलिटी केतेबेले बढ़े एग्रीकल्चर ना व्हेन यू यूज मोर फर्टिलाइजर ना तो आम फर्टिलाइजर अधिक यूज करूचे मोर यूज ऑफ फर्टिलाइजर तो करछे सेतबेला होछ हैला yes pesticides chemicals ये सब गुड़ाक रिड्यूस हुआ दरकार सस्टेनेबल बुझेला बा ग्रीन फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग करिया दरकार कौन कहली ग्रीन फार्मिंग बा ऑर्गेनिक फार्मिंग एटी करिया दरकार नेक्स्ट इज ग्रीन सिटीज एंड स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कौन एटा ग्रीन सिटीज को so smart cities it involve integrating technology with sustainability कौन क्वेश्चन it integrates technology with sustainability so it reduces pollution and enhance quality of life बुझिला cities like Singapore, Copenhagen, they have implemented policies for green transportation, energy efficiency, sustainable urban planning. Next, green finance. Now, what is green finance? It refers to any structural financial activity like investment, lending, insurance, which is for environmental support, better environmental outcome. Which is for better environmental outcome. बुझेला so green finance ର ଅର୍ଥ କଣ finance for a green project कौन ପାଇଁ କହିଲି ନା this is a finance for a green project ପାଇଁ finance को हम green finance ବୋଲି କହୁଛୁ so addressing climate change biodiversity loss resource depletion ये सब so ये कौन करछ ना लो कार्बन रेसिलिएंट इकोनॉमी क्योंकि कार्बन ता अधिक कार्बन emission हबनी the economy will develop economy will grow but without having a less or zero environmental impact बुझिएला is this clear green bonds are considered the debt securities issued to raise capital specifically for green projects को प्रोजेक्ट पाई ना मे बी फॉर रिन्यूएबल प्रोजेक्ट सोलर विंड हाइड्रो पावर है ना स्मार्ट ग्रिड पाई क्लीन ट्रांसपोर्टेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी व्हीकल वेस्ट मैनेजमेंट पाई ये सब पाई हला कोन ना ग्रीन बॉन्ड green loans these are the loans granted to companies governments or individuals to finance project with a positive environmental impact so often they have favorable terms like lower interest rate longer repayment period कम interest rate long in ये period longer repayment period ये सब मिले loan for installing solar panel energy efficient appliance at home ये सब then green investment fund next is green investment fund now what is this is sustainable fund this is eco-friendly fund now this fund will be utilized for renewable energy water conservation pollution control carbon emission it may have to use kara there is a global clean energy fund so it invests in companies who company
डेवलपिंग एंड एडवांसिंग क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, जो कंपनी रे क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी को यूज करा जाउछि, जो क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी को जोठी यूज करा जाउछि ताकू डेवलप करिया को। ग्रीन क्लाइमेट फंड, ग्रीन एनर्जी, ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फंड फोकसेस ऑन इन्वेस्टिंग इन कंपनीज डेवलपिंग एडवांस क्लीन एनर्जी। ग्रीन क्लाइमेट फंड, this is a UN backed initiative. It helps developing countries to mitigate climate change and adapt to its effects. Carbon market and carbon credit. So carbon market, they allow countries or companies to trade carbon emission allowances. Carbon market, मनकर दीटा कंट्री, गोटे कंट्री को दिया अलाउ कराई 50 टन कार्बन एमिशन पई, आ गोटे को 60 टन, धर दीटा को 50 टन, गोटे एमिशन कला 20, तार 30 बंचिला, आ गोटे कंपनी आ गोटे कंट्री जदी ताटू अधिक करे 60 तार से 30 टन परचेस करे नै जाय पारियो। दैट इज कार्बन मार्केट। कोन कहूछ एटा को कार्बन मार्केट कहूछ हैला। So carbon credit can also be purchased by businesses to offset their carbon footprint. Okay. Now clear sustainable development na mate ko kichi jodi doubt rehla. Any doubt on sustainable development? Any doubt on this? Clear समझते? कल क्वेश्चन को आसीबा। पीडीएफ मिल जिवो रे, कालिया पीडीएफ मिल जिवो, टेलीग्राम चैनल में मिल जिवो, पीडीएफ मिल जिवो तुमको ओपीएससी वाला चैनल रे, पूरी मिल जिवो, ओपीएससी वाला चैनल में मिल जिवो। हैला कहली बा कैप एंड ट्रेड कहली परा, कोन कहली मन कर दीटा कंट्री अछि बा दीटा कंपनी अछि ए और बी, याकू दिया 50 टन, याकू दिया 50 टन, ये यूज कला लेट्स से 20 टन, और रेस्ट आर बंचिला केते 30 टन, ये से 30 टन टा आकू बिकी परियो, बुझिला कि नहीं, ये से 30 टन टा ताकू बिक्री करि परियो, सिंपल जिंस एटाला कैप एंड ट्रेड सिस्टम। यू कैन सेल द सरप्लस अलाउंसेस टू अदर्स। चल तले एतिकी पाठ बुझी गले, हम आ गोटे क्वेश्चन को ताले आसीबा, आज आ गोटे क्वेश्चन को आसीबा। देखो ए क्वेश्चन देखो ठीक, क्वेश्चन कहूची it is argued that strategy for inclusive growth is intended to meet the objectives of inclusiveness and sustainability together. Comment कौन कहूची ना inclusiveness and sustainability together, can you meet these two things together? Inclusion or inclusive growth means for all, inclusive growth means for all, है sustainability means environmental aspect,
Sustainability means environmental aspect. The question which ki ye dita can these two go simultaneously? So inclusive growth means which is for fairly across the society. So what are the strategy for inclusive growth then? What are the strategy for inclusive growth? The regional development strategy. Regional development strategy. Skill development. Skill development. Inclusive growth. Governance and institution. Governance and institution means like Niti Aayog and other institutions. Governance means what government does is called governance. New generation inequality. Access to infrastructure. Access to infrastructure. Productive employment. Long-term perspective. Poverty alleviation. Poverty alleviation for all. These are strategy for inclusive growth. Now post pandemic factor कौन है? Release of pent up demand इटा हम पढ़ी परे आसीबो. New near universal vaccination coverage. Now pandemic परे पाखापाखि समस्त को vaccination दिया जाइछ. After COVID-19 pandemic कौन है पाखापाखि समस्त को vaccination दिया जाइछ. So sustainability of consumption led model हमें कौन करि परिबा? Consumption led model. Sustainability of a consumption led model. It कौन करि परिबा? Now we can have tight monetary policy. Means less liquidity. कौन यार अर्थ होची less liquidity. High fiscal deficit. So less revenue, more expenditure. Current account deficit. Inflation rate high. Future growth ta slow hoba. Consumption basket skewed hoba. Rate of unemployment high hoba. These are the challenges in sustainability of a consumption led model. These are challenges in sustainability of a consumption led model. Next. Investment in social infrastructure is key to engineer inclusive and sustainable growth. Social infrastructure investment कले ये कुछ include sustainable growth है जो inclusive growth है जो. ताले infrastructure केते प्रकार ना infrastructure दी प्रकार गोटे हला physical infrastructure आ गोटे हला social infrastructure बा याको कहा जाए hard infrastructure याको कहा जाए soft infrastructure. या भीतर आसे कौन ना या भीतर आसे roadways, railways ये सब आसे वो या भीतर आसे वो ना school, college बा education, health ये सब आसे social भीतर. मुझे ये सब कहाँ भीतर है? ये सब आसे social भीतर. Clear? So ये कुछ social infrastructure like education, health रे जब investment करूँचे ताले inclusive growth हो केमिति? So education, health, skill development, women empowerment, environment, justice, achievement of UN SDG sustainable development goals, provision of social security. बुझिला ताले सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है सिंपल कथा आमे कहूचे कोन हबो ना इंक्लूसिव ग्रोथ हे परिबो प्लस सस्टेनेबल डेवलपमेंट. देखो केते सिंपल और सुंदर क्वेश्चन. नेक्स्ट एक्सप्लेन इंट्रा जनरेशनल एंड इंटर जनरेशनल इश्यू ऑफ इक्विटी. इंट्रा एवं इंटर जनरेशनल इश्यू ऑफ इक्विटी कौन लिखियो एट? कौन लिखियो ताले एठी? इंट्रा और इंट्रा जनरेशनल इक्विटी. सो यार अर्थ कौन? इंटर इंट्रार अर्थ होची इक्विटी अमंग सेम जनरेशन माने आम सेम जनरेशन माने रिच और पोर. रिच भी ए जनरेशन ना पोर भी ए जनरेशन. सो ये कुछ रिच पोर डिवाइड
जेंडर इनइक्वालिटी मेल फीमेल डिवाइड डिजिटल डिवाइड नेक्स्ट कौन कहली डिजिटल डिवाइड माने किसी लोगों पाखे एक्सेस अच्छी एक्सेस टू टेक्नोलॉजी आउ किसी लोगों पाखे एक्सेस नहीं लेस एक्सेस टू टेक्नोलॉजी रूरल आउ अर्बन डिवाइड डिपेंडेंसी ऑन डेवलप्ड नेशंस को मान कर एलडीसी लेस डेवलप्ड कंट्री गुडा डेवलप्ड नेशन ट्रांसफर ऑफ बर्डन ट्रांसफर कौन कहली बर्डन ट्रांसफर ये इंटर माने एबे जनरेशन एवं फ्यूचर जनरेशन कथा पड़ी ना रिसोर्स एक्सप्लोइटेशन आमे रिसोर्स एक्सप्लोइट करबा नेक्स्ट जनरेशन पाखे रिसोर्स ही नथियो ग्लोबल वार्मिंग आमे क्रिएट करबा ग्लोबल वार्मिंग नेक्स्ट जनरेशन ऊपर इंपैक्ट पड़ो माइंडलेस डिफोरेस्टेशन आमे करबा डिफोरेस्टेशन तांको ऊपर इंपैक्ट कास्ट सप्रेशन आमे एबे करबा तांको ऊपर डिपेंड फ्यूचर ऊपर लिटरेसी रेट एबे कमी एबे आमे पाठ पढाइबानी फ्यूचर ऊपर इंपैक्ट पड़ो हला डिजिटल इलिटरेसी क्रिएट करना दिस इज इंटर जनरेशनल इंटर मीन्स वर्तमान जनरेशन वर्सेस भविष्य जनरेशन इंट्रा मीन्स वर्तमान जनरेशन बट डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स ये कथा हमको लिखार अच्छे लिखिपारे 4 नंबर क्वेश्चन समस्त लिखी हम ना नहीं 4टा क्वेश्चन लिखी हम इज दिस क्लियर ना डाउट यदि डाउट अच्छी पचार पचार यदि डाउट अच्छी पचार डाउट प्लीज नो डाउट ऑल क्लियर बढ़िया ताले आज आमे कोन पढिले जस्ट रिकैप मु कहि दोची को एस्पेक्ट देखिले आमे केवल मेंस एस्पेक्ट ही कहली 4टा क्वेश्चन कले तापर सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखिले देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वुमेन मानकर कंट्रीब्यूशन एंड हाउ वुमेन आर डिप्राइव्ड ऑफ इट से विषय डिस्कस कले हैला वुमेन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट देन इंपोर्टेंट पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी सोशल सस्टेनेबिलिटी एवं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मानक ऊपर डिस्कस कले 17टा गोल चैलेंजेस इन अचीविंग दिस गोल ये गोल अचीव करियार चैलेंजेस देखिले हैला सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन एक्शन कौन करा जाई परिबा हमें देखिले कौन करा जाई परिबा देखिले रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ग्रीन बॉन्ड ये सब देखिले सब कौन करा जाई परिबा हैला एवं 4टा इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कले हमें ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ बुझी हैला मो कथा दिस क्लियर समस्त को जदि डाउट रहिला को जदि डाउट रहिला को हमें नेक्स्ट क्लास रे कोन टॉपिक आनिया बा कोन सब्जेक्ट आनिया मेंस पे डिस्कशन चलची मो इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ाई थी जम्मू काश्मीर इशू साइबर क्राइम एंड बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स रो पढ़ाई आई होप पढ़ी समस्त कौन आनिया सब्जेक्ट इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ाई इकोनॉमिक्स रे एते गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ाई ऑलरेडी आज आउ किसी इंपोर्टेंट सब्जेक्ट आनिया नेक्स्ट क्लास ठीक अच्छे थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए आनिवा डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट रे आनिवा बट फुल कोर्स ये सब गुड़ाक फुल कोर्स भी अवेलेबल अच्छी फिजिक्स एप्लिकेशन सब चेक करि परिबे एक्स्ट्रा नॉलेज एंड एवरीथिंग इज देयर सो यू गो टू एप्लिकेशन ताले हमें कोन देखिले आज रो क्लास रे हमें डिस्कस करले अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ ठीक है ऑलराइट दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन
डाउनलोड करेंगे समस्त ये नोट्स को PW OPSC वाला चैनल टेलीग्राम चैनल इट विल बी अवेलेबल you can download it. That's all for this session. Thank you. Good night. Science technology definitely आसिबो. It will be taken by Sachin sir. Science technology भी आनिया. सब क्लास आसिबो. Don't worry. Thank you everyone. आउ किछि important subject যদি দরকার তাহলে আমি তাকু भी आनिया. ठीक अछि. All right. Thank you. Good night.